ठाणे में एकनाथ शिंदे अस्पताल पहुंचे हैं। बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी उनके साथ मौजूद हैं। शिंदे को डॉक्टर्स की टीम ने देखा है, कई तरह की उनकी टेस्टिंग भी की गई है और फिलहाल अस्पताल में ही एकनाथ शिंदे को रखा गया है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब एकनाथ शिंदे अपने बेटे के साथ अस्पताल पहुंचे थे। ठाणे का ये जुपिटर अस्पताल है जहां पर एकनाथ शिंदे को फिलहाल रखा गया है। जो जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से वो ये है कि एकनाथ शिंदे के गले में इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन की वजह से एकनाथ शिंदे का सीटी स्कैन होगा थोड़ी देर में। शिंदे को की सेहत को लेकर जो अपडेट है वो हम आपको बता दें। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है चलिए इस अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन इस वक्त संसद के सदन का हमें रुख करना होगा। एस जयशंकर विदेश मंत्री इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। Abnormal since 2020 when peace and tranquility in the border areas were disturbed as a result of Chinese actions. Recent developments that reflect our continuous diplomatic engagement since then have set our ties in the direction of some improvement. The House is cognizant of the fact that China is an illegal occupation of 38,000 square kilometers of Indian territory in Aksai Chin as a result of the 1962 conflicts and the event that preceded it. Furthermore, Pakistan illegally ceded 5,180 square kilometers of Indian territory to China in 1963, which has been under its occupation since 1948. India and China have held talks for multiple decades to resolve the boundary issue. While there is a line of actual control, LAC, it does not have a common understanding in some areas. We remain committed to engaging with China through bilateral discussions to arrive at a fair, reasonable, and mutually acceptable framework for a boundary settlement. Honorable members would recall that the amassing of a large number of troops by China along the LAC in eastern Ladakh in April-May 2020 resulted in face-offs with our forces at a number of points. The situation also led to disruption of patrolling activities. It is to the credit of our armed forces that despite logistical challenges and the then prevailing COVID situation, they were able to counter-deploy rapidly and effectively. Honorable Speaker, sir, the House is well aware of the circumstances leading to the violent clashes in Galwan Valley in June 2020. In the months thereafter, we were addressing a situation that had not only seen fatalities for the first time in 45 years, but also a turn of events serious enough for heavy weaponry to be deployed in close proximity to the LAC. While a determined counter-deployment of adequate capability was the government's immediate response, there was also the imperative of a diplomatic effort to diffuse these heightened tensions and restore peace and tranquility. Honorable Speaker, sir, the contemporary phase of our ties with China dates back to 1988, when there was a clear understanding that the Sino-Indian boundary question will be settled through peaceful and friendly consultations. In 1991, the two sides agreed to maintain peace and tranquility in the areas along the LAC, pending a final settlement of the boundary question. Thereafter, in 1993, an agreement was reached on the maintenance of peace and tranquility. Subsequently, in 1996, India and China agreed on confidence-building measures in the military field. In 2003, we finalized a declaration of principles of our relations and comprehensive cooperation, which included the appointment of special representatives. In 2005, a protocol was formulated
on modalities for the implementation of confidence-building measures along the LAC. At the same time, the political parameters and guiding principles for the settlement of the boundary question was agreed to. In 2012, a working mechanism for consultation and coordination, WMCC, was established, and a year later, we reached an understanding on border defense cooperation as well. Speaker, sir, the purpose of my recalling these agreements is to underline the elaborate nature of our shared efforts to ensure peace and tranquility, and to emphasize the seriousness of what its unprecedented disruption in 2020 implied for our overall relationship. The situation arising after our counter-deployment in 2020 called for multiple sets of responses. The immediate priority was to ensure disengagement from friction points so that there would be no further untoward incidents or clashes. This, sir, has been fully achieved, as I will explain. The next priority will be to consider de-escalation that would address the massing of troops along the LAC with associated accompaniments. It is also evident that the management of border areas will require further attention in the light of our recent experiences. In all of this, we were and we remain very clear that the three key principles must be observed in all circumstances. One, both sides should strictly respect and observe the LAC. Two, neither side should attempt to unilaterally alter the status quo. And three, agreements and understandings reached in the past must be fully abided by in their entirety. Honorable members would appreciate that as a result of the sustained tension and specific developments in the border areas, our overall relationship with China was bound to be impacted adversely. In the new circumstances, it was obviously not possible to continue the normal exchanges, interactions, and activities as in the past. In this regard, we made clear that the development of our ties were contingent on the principles of mutual sensitivity, mutual respect, and mutual interest. Throughout this period, honorable members would also be aware that government has maintained that India-China relations cannot be normal in the absence of peace and tranquility in the border areas. The combination of a firm and principled stance on the situation in the border areas, as well as a clearly articulated approach to the totality of our ties, have been the foundation of our engagement with China for the last 4 years. We have been very clear that the restoration of peace and tranquility would be the basis for the rest of the relationship to move forward. Since 2020, our engagement was therefore focused on these objectives. This took place at various levels involving different arms of the government. I myself have had meetings with my Chinese counterpart, as indeed has my senior colleague, Raksha Mantriji. Our NSA has also engaged his Chinese counterpart, both being special representatives on the boundary question. More detailed discussions were conducted by the Working Mechanism for Cooperation and Coordination, WMCC, at the diplomatic level. Its military counterpart was the Senior Highest Military Commanders Meeting, SHMC mechanism. The interactions were naturally very tightly coordinated with a combined presence in the negotiations of both diplomatic and military officials. Since June 2020, 17 meetings of the WMCC and 21 rounds of SHMC have taken place. So, in this background, I would like, sir, to inform the House today about the agreement reached on 21 October 2024 regarding Depsang and Demchok. The twin considerations of an unstable local situation and an impacted bilateral relationship were clearly the drivers for these recent endeavors. These two areas have been the focus of our discussions in both WMCC and SHMC with the Chinese side since September 2022, when the last disengagement agreement was concluded at Hot Springs area. In the lead up to the October 21 agreement,
I had discussed both the specific disengagement issue as well as the larger relationship with my Chinese counterpart in Astana on 4 July and Vientiane on 25 July. Our national security advisors, ours and the Chinese, met in St. Petersburg on 12 September, and the problem in these two areas pertained primarily to obstructions of our long-standing patrolling activity. In Demchok, there was also the question of access by our nomadic population to traditional grazing grounds, as well to sites of significance to the local people. As a result of this recent understanding, arrived at after intensive negotiations, resumption of patrolling to the traditional areas is underway. It was initially tested by sending out patrols for verification of disengagement on the ground and is being followed up by regular activities as per the agreed understanding. Following the October 21 understanding, Prime Minister and President Xi Jinping had a meeting on the sidelines of the BRICS summit in Kazan on October 23. They welcomed the understanding and directed the foreign ministers to meet and stabilize and rebuild the relationship. The special representatives are also to oversee the management of peace and tranquility, besides exploring a fair, reasonable, and mutually acceptable solution to the boundary question. In pursuance of that, I recently held discussions with Foreign Minister Wang Yi again on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro on November 18th. Raksha Mantriji has also met the Chinese Defense Minister Dong Jun at the ASEAN Defense Minister ADMM Plus meeting in Vientiane on November 20. The two ministers discussed progress on the recent agreement on disengagement, the need to address de-escalation, and the requirement of strengthening confidence-building measures. They agreed on the importance of continuing meetings and consultations at various levels. Sir, the House will remember that on October 21, the October 21 agreement is the latest in the series of an understanding in regard to the resolution of the situation at various friction points in eastern Ladakh. In the aftermath of the events in May-June 2020 and the initial disengagement in Galwan Valley in July 2020, there was a foreign ministers meeting in Moscow in 10 September 2020. The government's position at that time was that the immediate task was to ensure comprehensive disengagement of troops in all the friction areas. It was emphasized that the large concentration of troops along the LAC was not in accordance with the 1993 and 1996 agreements. The Indian side, it was made clear, would not countenance any attempts to change the status quo unilaterally. We also expected that all agreements and protocols pertaining to the management of the border areas would be scrupulously followed. Sir, through you, I would like to inform the House that disengagement has been achieved in full in eastern Ladakh through a step-by-step process, culminating in Depsang and Demchok. With the task of disengagement completed, it is now our expectation that discussions would commence with regard to the remaining issues that we have placed on the agenda. For the benefit of honourable members, I would also flag to your attention previous positions articulated by the government in Parliament on this issue. On 15th of September 2020, Raksha Mantriji had made a detailed statement on Chinese attempts to transgress the LAC and the appropriate response given by our armed forces. On the 11th of February 2021, Raksha Mantri had again briefed the House about our disengagement agreement in the north and south banks of the Pangong Lake. Thereafter, in August of 2021, a third phase of disengagement took place in the area of Gogra, whereby troops would henceforth be in their respective bases. The next step took place in September 2022, pertaining to the Hot Springs area. Again, forward deployments ceased in a phased, coordinated and verified manner, resulting in the return of troops to their respective areas. The most recent agreement, the October 21 agreement, comes in the wake of the earlier ones. It completes the first phase of what we had agreed to in Moscow in September 2020. As members are aware, there is a long history of frictions, transgressions and face-offs in several sectors of the India-China border. This goes back to Bara Hoti from 1954, to Longju
in 1959, to Sumdurongchu from 1986-1995, and Depsang in 2013, amongst others. In the past, earlier governments have agreed to a range of steps to diffuse situations that have arisen at different times, including offers on our side to create demilitarized zones, limited non-patrolling zones, relocation or withdrawal of posts, disengagement of troops, and dismantlement of structures. Different locations have seen different solutions being examined. Where the October 21 understanding is concerned, our objective has been to ensure patrolling as in the past to the relevant patrolling points, as well as resumption of grazing by our civilians as per long-standing practice. This is indeed what we have agreed upon in regard to Depsang and Demchok. In a few other places where friction occurred in 2020, steps of a temporary and limited nature were worked out based on local conditions to obviate the possibility of further friction. This, I must stress, applies to both sides and can be revisited as the situation demands. In that sense, our stance has been resolute and firm and serves our national interests fully. The ensuring of our national security in this manner is the result of cumulative and coordinated endeavors of many parts of the government, obviously centered around our defense and security forces. The competence and professionalism of our services in this period was displayed in our speedy and effective counter-deployment. In the negotiations with China, the defense and diplomatic arms worked in lockstep to ensure that our national interests were comprehensively met. Sir, in that context, the House would also recognize that there has been a significant improvement in the border infrastructure, which has made such effective counter-deployment possible. This is reflected, amongst others, in the increase of border infrastructure allocations in the last decade. The Border Roads Organization, BRO, alone has incurred 3 times the expenditure level of what it was a decade ago. Whether it is the length of the road networks, of the bridges, or the number of tunnels, there has been a substantial increase over the earlier period. Notable milestones in recent years include the Atal Tunnel to Lahul Spiti, the Sela and the Nechifu tunnels to Tawang, the Umlingla Pass Road in southern Ladakh, and the extended opening of the Zojila axis. Work is progressing on some strategically important roads and airfields in Ladakh. The adoption of new technologies in high altitude, remote, inaccessible, and permafrost areas has also been significant. All of this reflects the government's firm commitment to protecting our borders and ensuring that our armed forces get the facilities and the logistical support that they deserve. Finally, sir, let me share with honorable members our expectation regarding the direction of our ties with China in the near future. Our relationship had progressed in many domains, but was obviously negatively affected by recent events. We are clear that the maintenance of peace and tranquility in border areas is a prerequisite for the development of our ties. In the coming days, we will be discussing both de-escalation as well as effective management of our activities in the border areas. The conclusion of the disengagement phase now allows us to consider other aspects of our bilateral engagement in a calibrated manner, keeping our national security interests first and foremost. In my recent meeting with Foreign Minister Wang Yi, we reached an understanding that the special representatives and the foreign secretary level mechanisms will be convening soon. I thank you, sir, and the honorable members for their attention, and I'm confident that the government has the full support in addressing the complexities of this important issue. देखिए, LAC पर हालात सामान्य हुए हैं और इसकी डिटेल जानकारी दे रहे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा के अंदर। LAC पर हालात सामान्य हुए हैं और भारत और चीन के बीच रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं। इस वक्त LAC पर किस तरह की स्थितियां, इसके बारे में देश को जानकारी दी गई है विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के दाचीगाम सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने विशेष खुफिया सूचना मिलने के बाद दाचीगाम जंगल के ऊपरी इलाकों में घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया है।
आतंकवादियों ने तलाशी के दौरान फायरिंग की, सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो जम्मू में घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने 2000 जवानों वाली 2 अतिरिक्त बटालियंस की तैनाती कर दी है। ये बटालियन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में तैनात की गई है, जहां से पाकिस्तान अक्सर घुसपैठ की कोशिश करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर वाला ये इलाका है। इन बटालियंस के जवान आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष रूप से ट्रेंड हैं। इन बटालियंस को ओडिशा से हटाकर जम्मू के कठुआ और सांबा जिलों में तैनात कर दिया गया है। कठुआ में सीमा के संवेदनशील हिस्सों के साथ पंजाब से लगते जम्मू के इलाकों में सुरक्षा ग्रिड को और ज्यादा पुख्ता बनाया गया है। सीमा पर पहले से तैनात प्रहरियों के पीछे दूसरी पंक्ति में इनकी तैनाती की गई। इन बटालियंस के जवान आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के सटे हुए इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है। ऐसे में आतंकियों के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से घुसपैठ करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा है। वहीं अब पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी संगठन ये प्रयास कर रहे हैं कि सर्दी के मौसम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ आतंकियों की करवाई जा सके, जिसके लिए बीएसएफ बेहद ज़्यादा अलर्ट है। वहीं बीएसएफ की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बीएसएफ की 2 अतिरिक्त बटालियनों को जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तैनात किया जा रहा है। इन 2 बटालियनों में तकरीबन 1000 जवानों को तैनात किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब ना हो सके। इससे पहले एमएचए की तरफ से एनएसजी कमांडोज को जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया है ताकि जल्द से जल्द जितने भी आतंकी जम्मू संभाग में, चाहे वो रजौरी इलाका हो, पुंछ हो, डोडा किश्तवाड़ इलाका हो, वहाँ पर अगर एनकाउंटर होता है तो इन एनएसजी कमांडोज को वहाँ पर डिप्यूट किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम और ख़ास बात ये कि क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकी ये प्रयास कर रहे हैं कि वो घुसपैठ कर सके, जिसके लिए सुरक्षा बल बेहद ज़्यादा अलर्ट है। पाकिस्तान के शकरगढ़ और सियालकोट इलाके में एक बार फिर आतंकी संगठनों द्वारा लॉन्च पैड्स को एक्टिव किया गया है। वहीं बीएसएफ की तरफ से जो अलर्टनेस है वो वहां पर बढ़ती जा रही है और 2 अतिरिक्त बटालियनों को यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जो है वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब ना हो सके। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में लगातार अंधेर जारी है। हिंदुओं में डर का माहौल है। कट्टरपंथी चुन चुनकर इस्कॉन को निशाना बना रहे हैं। हालत यह हो गई है कि चिन्मय प्रभु के वकील को भी नहीं छोड़ा गया, उन पर भी हमला किया गया, मारपीट की गई, जिसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मुद्दा वहां का स्थानीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया हिंदुओं के दमन के खिलाफ आवाज उठा रही है, वैसे वैसे बांग्लादेश के कट्टरपंथी बेखौफ हो रहे हैं। वो सरेआम ऐलान कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना मना है। कट्टरपंथी तंजीमें खुलेआम बांग्लादेशी हिंदुओं को चैलेंज कर रही हैं। और बांग्लादेश में चिन्मय दास के वकील पर जानलेवा हमला हुआ है। इस्कॉन प्रवक्ता राधा रमण दास ने यह दावा किया है, कट्टरपंथियों ने चिन्मय दास के वकील पर हमला किया। चिन्मय दास के वकील के घर में भी तोड़फोड़ की गई है। चिन्मय दास के वकील रमन रॉय इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं। और टीवी 9 भारतवर्ष से बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता राधा रमण दास ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने मौजूदा हालात और चिन्मय प्रभु के वकील पर हमले को लेकर क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। एक एक्स पे पोस्ट किया सोशल मीडिया पे आपने कि जो वहां पर
इस्कॉन के कृष्णदास जी हैं, उनके वकील पे जानलेवा हमला किया गया है। ये मामला क्या है और क्या इस बारे में आप हमें टीवी9 को बता सकते हैं? कौन लोग थे, क्या हमला किया गया है, उनके जो लॉयर थे, चूंकि आज देखिए हियरिंग भी है उस मैटर को लेकर, जमानत को लेकर, तो उनकी सिचुएशन क्या है? रमेन रॉय एक सीनियर एडवोकेट है और उनकी तरह मतलब उनके साथ में और 50 की 51 लॉयर चिन्मय कृष्णदास के साथ खड़े थे जब उनको पहली बार कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। तो हमने देखा कि कोर्ट में किस तरह से पहले तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिर पुलिस के साथ मिलकर कुछ जो उग्रवादी लोग थे उन्होंने भी हमला किया और उस दिन ही एक लॉयर की हत्या कर दी थी। बाद में ये पता चला कि जो लॉयर चिन्मय कृष्णदास के साथ अपेयर हुए थे उनको बाहर में बाद में भी मारा गया है और उनके घरों में आक्रमण हुआ है। उसमें से रेमन रॉय ये भी एक सीनियर एडवोकेट हैं, तो उनके घर में भी आक्रमण करके इतनी बुरी तरह से पीटा है कि वो अभी आईसीयू में है। ये लास्ट वीक ही उनको पीटा था, लेकिन अभी आईसीयू में है और बहुत सीरियस है। उनका परिवार बहुत ही चिंतित है। तो चिन्मय कृष्णदास जी जो कि इस वक्त कस्टडी में है, वहां की उस सरकार के कस्टडी में है जिस पर पहले से ही बायस होने का, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप है, क्या उनके जीवन पर भी आपको लगता है कोई संकट है? क्योंकि उनके वकीलों पर तो आप बता ही रहे हैं कि जान का खतरा है, उनको मारा जा रहा है, उन पर जानलेवा हमला किया जा रहा है, एक वकील तो आईसीयू में है। ये तो बहुत स्वाभाविक है ये सोचना। जो जेल होता है वो सामान्य जगह होती नहीं है। जेल के अंदर में महात्मा तो रहते नहीं हैं, तो इतने सारे जो वहां पर जो कैदी हैं और वो अलग अलग, कोई टेररिज्म, कोई मर्डर, कोई किडनैपिंग के आरोप में वहां पर बंद हैं, उसके बीच में एक साधु को रखना उस तरह है जैसे प्रहलाद महाराज को सांपों के बीच में हिरण्यकश्यप ने रखा था। तो ये बहुत दुखद है, इसीलिए विचार तो आते हैं और लेकिन हम आशा करते हैं कि वहाँ की सरकार उनको अलग सेल और अलग सुरक्षा दी होगी जेल में, तो ये हम आशा कर सकते हैं। तो इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमण दास जी के साथ जो हमने ये बातचीत की है, इसमें उन्होंने जो हालत बयां की है वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश में हालत ये हो गई है कि इस्कॉन को एक कट्टरपंथी आतंकी गुट साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस्कॉन से जुड़े लोगों को परेशान किया जा रहा है। हालत यह है कि इस्कॉन से जुड़े लोग खौफ में हैं। बांग्लादेश इस्कॉन में कैसे डर का माहौल है, आइए ये आपको बताते हैं। कुछ अहम डिटेल्स जो बांग्लादेश से हमें हासिल हुई हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के कुल 75 से ज्यादा मंदिर हैं और इस वक्त ऐसा लगता है कि ये मंदिर टारगेट पर हैं। इस्कॉन के 1200 से ज्यादा पुजारी मंदिरों के अंदर ही रहने को मजबूर हैं। ये इस वक्त वहां पर आलम है। बांग्लादेश में इस्कॉन के 2 लाख से ज्यादा सदस्य हैं और इस्कॉन ने बांग्लादेश में अपने कार्यक्रम सीमित कर दिए हैं क्योंकि इस वक्त हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। चटगांव, कुश्तिया, मयमनसिंह शहरों में इस्कॉन के सभी कार्यक्रमों को रद्द किया गया है क्योंकि खतरा बढ़ता जा रहा है। इस्कॉन से जुड़े भक्तों ने भगवा कपड़ा पहनना छोड़ दिया है। आप देखिए, डर का आलम ये है। भक्तों ने मंदिरों से बाहर निकलना छोड़ दिया है और जरूरी सामान के लिए सामान्य कपड़ों में वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि कहीं कट्टरपंथी उन्हें टारगेट ना कर दें, उनके ऊपर हमला ना हो जाए, ये डर है। भगवा कपड़ों की वजह से हमले का डर है, इसलिए भगवा कपड़े पहनने छोड़ दिए गए। भारत आ रहे 83 इस्कॉन अनुयायियों को बॉर्डर गार्ड ने वापस लौटा दिया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, हालात तो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है, अनुयायियों को टारगेट किया जा रहा है इस्कॉन के। भारत सरकार की बांग्लादेश को लेकर अभी पॉलिसी क्या है और क्या वहां से पीड़ित लोग अगर हिंदुस्तान का रुख करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? हालात क्या है और हमारी सरकार का स्टैंड क्या है, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर की तारीख भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए बेहद अहम है। वो इसलिए क्योंकि 3 दिसंबर 1971 वो दिन था जब भारतीय सेना ने बांग्लादेश में, जो तब पूर्वी पाकिस्तान था, वहां पर बंगाली लोगों के जानो माल की रक्षा के लिए वहां गई थी और फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और 13 दिन के युद्ध के बाद एक नया बांग्लादेश बना था। तो आज उस घटना को याद करने का इसलिए भी दिन है कि आज की तारीख में जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं और आज जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, तो अगर टीवी9 के जरिए वो लोग देख रहे होंगे तो उन्हें ये याद करना चाहिए कि कैसे
भारत ने या भारत की सेना ने उस वक्त उनके पूर्वजों की जान की रक्षा की थी। लेकिन आज वही लोग किस तरीके से इस्कॉन को या फिर हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। तो भारत सरकार इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। देखिए, बहुत सारे सख्ती के उपाय उठाए जा सकते हैं। मैंने कई लोगों से बात की भारत सरकार में, उनका कहना था कि हम सख्ती से तमाम तरह के उपाय उठा सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि हमें पता है कि इसके पीछे में दरअसल अभी जो मौजूदा सरकार है बांग्लादेश की, वो और कुछ कट्टरपंथी संगठन ही हैं। एक बार जब ये नियंत्रण में हो गए तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें का समाधान हो सकता है। ठीक है मनीष, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और हम सब हिंदुस्तान में उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो दिन आएगा और ये जो कट्टरपंथी हैं इन्हें नियंत्रण में रखने में कामयाब होगा बांग्लादेश और वहां की कट्टरपंथी सरकार, ताकि हिंदुओं पर हमले बंद हो, अल्पसंख्यकों पर यह अत्याचार बंद हो, यह सिलसिला बंद हो। शुक्रिया आपका। अब बात यूपी की राजधानी लखनऊ की एक शादी की, जो कल रात जंग के मैदान में तब्दील हो गई। कल रात लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के छात्रों ने एक शादी समारोह में जमकर बवाल मचा दिया। छात्रों पर आरोप है कि वो जबरन शादी समारोह में शामिल हो गए। पहले तो बारात में डांस करने लगे, जब बारातियों ने विरोध किया तो मैरिज हॉल में घुस आए और खाना खाने लगे। शादी समारोह में शामिल परिवार वालों ने छात्रों को बाहर जाने को कहा तो वो उग्र हो गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों की पिटाई की और तोड़फोड़ कर दी। बारात में महिलाएं और बच्चे चीख रहे थे। छात्रों के हाथ में जो चीज आ रही थी उसी से वो हमला कर रहे थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी शादी समारोह। यहां पर छात्रों ने जमकर पथराव भी किया। यही नहीं, कई राउंड फायरिंग हुई और बमबाजी तक हो गई। बमबाजी में कई लोग घायल हो गए। सोचिए, जिस घर का ये समारोह था उस पर क्या बीती होगी। शादी के दिन ये सब कुछ हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची, जिसके बाद बवाल कर रहे छात्र वहां से भाग गए। फिलहाल पुलिस ने 2 छात्रों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, नौबत क्या आ गई, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। पत्थरबाजी हुई, बमबाजी हुई। लखनऊ में शादी के दौरान हुई इस मारपीट को लेकर दूल्हे ऋषभ ने टीवी9 से खास बात करते हुए पूरी घटना के बारे में बताया है। वहीं दुल्हन महिमा का भी कहना है कि शोर शराबे में उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आया। लेकिन आप लोग के चेहरों की जो उदासी है वो ये बता रही है कि कल जो मंजर, जो माहौल आप लोगों ने देखा है वो आप लोग भूल नहीं पाए। क्या हुआ था कल? सर, अचानक जो है मैं बग्गी में बैठा हुआ था। हमारे पिताजी हमारे बगल से तेज़ी से गुजरे क्योंकि उनके पैर में चोट है, और बगल से कम 15-20 लड़के जो है आगे जाके जो है खड़े हो गए। बस 2 मिनट के बाद ही जो है मारना पीटना चालू हो गया। हमारे घर में जो है 5-6 लोगों का मतलब ईंटों से या कड़ों से सर खोल दिया गया। मुझे कैसे न तैसे करके जो है मुझे अंदर कराया गया। बस मेरा परछनी हो रहा था, फिर वो लोग गेट खोल के आए, फिर तोड़ना फोड़ना चालू कर दिया। किस बात की अदावत थी? इतना गुस्सा, इतनी नफरत उन्हें क्यों थी आपकी बारात से? सर पता नहीं मुझे कि मतलब क्या हुआ। हमारी तो समझ लीजिए इतनी मेहनत करने के बाद, इनके घर के मेहनत होने के बाद इतना खाना सब फेंका गया। सिर्फ सिंदूर भर के मैं ले आया इनको, बस शादी तक नहीं करने का मौका मिला? कुछ भी नहीं मिला। बिना शादी के खाना, घबराहट हो रही थी दिल के अंदर कि मतलब एक गिलास पानी पीना मुश्किल था। ये सब कुछ हुआ तो आप कहाँ थी? आपने क्या देखा? मैं तो भाई के साथ पार्लर से आ ही रही थी। बहुत देर से बाहर ही खड़ी थी। घर से फ़ोन आया कि अभी मत आना, अभी मत आना, यहाँ पर बहुत लड़ाई हो गई है। एक तो मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। सब कुछ देख के इतना डर लग रहा था। मैं जब अंदर आई हूँ इतना रोते हुए आई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब मना कर रहे हैं, हटो हटो, इतना शोर शराबा आ रहा है। कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। क्या क्या सपने सजाए थे आपने कल के लिए? बहुत कुछ सोचा था पर कुछ भी नहीं हो पाया। बहुत कैसे सी जयमाल एंट्री सोची थी कि अंदर आएंगे, फिक्स तो मेरी कुछ भी नहीं है कि एंट्री के लिए भी बहुत कुछ सोचा था। जब ऊपर जयमाल होगा तब भी बहुत कुछ सोचा था, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी, एक तो घबराहट इतनी हो रही है, सब शोर मचा रहे हैं। बस सिंदूर भर के मुझे लाया गया। मेरी शादी भी नहीं हुई है पूरी, कुछ भी नहीं हुआ। फेरे भी बहुत, बस जल्दी जल्दी जो भी हुआ हमने तो काउंट कुछ भी नहीं किया है। बस सिंदूर भर के तुरंत घर ले आया गया है मुझे। आप भी रो रहे थे, आपको भी नुकसान पहुंचाना, आपके लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तो खुद रो रही थी, मेरे घर वाले इतना रो रहे थे। क्या क्या सोचा था
पूरा घर रो रहा था मेरा कि ये हुआ क्या है।